अस्सलाम वालेकुम एंड हाय एवरीवन, दिस इज़ मी शहरियार हैदर भट्टी। मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप भी बिल्कुल खैरियत से ठीक ठाक होंगे। तो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में मैंने आपको फिज़िक्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस मार्क करवाए थे जो आपके आने वाले पेपर्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। तो आज हम फिज़िक्स के रिमेनिंग लॉन्ग क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स करेंगे और मैं आपको इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स मार्क करवाऊँगा। सो जस्ट ओपन योर बुक एंड जस्ट मार्क अलॉन्ग विथ मी। सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट बैक टू द स्क्रीन वेरी सून। Okay, so students, as previously I told you about the important short questions और अब मैं आपको important long questions और numericals के बारे में बताऊंगा। So let's get started। हमारे पास यूनिट नंबर 1 से एजुकेशन वर्ल्ड ऑफिशियल गैस पेपर 2022 FSC पार्ट 1 ICS सब्जेक्ट फिजिक्स important long and numericals। Okay students, these guest papers have been prepared by my whole team including myself, Mr. Muzammil and Mr. Munib, and these guest papers are best for Lahore board, Gujranwala board, Rawalpindi, Sargodha, Faisalabad, Sahiwal, Multan, DG Khan, Bahawalpur, Azad Kashmir, etc. सो स्टूडेंट्स, मैंने जैसा कि आपको पता है कि हमारे पास स्कीम के मुताबिक चैप्टर नंबर 1 से कोई भी लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं है। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम चैप्टर नंबर 2। हमारे पास जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग है वो है डिफाइन वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, डिफाइन स्केलर एंड डॉट प्रोडक्ट, सिमिलरली डिस्क्राइब वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट, गिव इट्स एग्जांपल कैरेक्टरिस्टिक, प्लस वी हैव टॉर्क, TORQE. Torque is also very important question, long question. Then we have important numericals 2.3, 2.5, 2.6, 2.9, 2.10, 2.11 and 2.14. Plus I prefer to do examples as well. Moving towards students, we have chapter number 3. We have long questions, law of conservation of momentum, rocket propulsions, projectile motion complete, and आई प्रेफर, जिस तरह मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चंस में भी बताया था कि ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग एज वेल एज शॉर्ट क्वेश्चंस है, तो आई प्रेफर आप इसको कंप्लीट ही याद करें। इसमें हमारे पास उसकी हाइट पूछी जाती है, उसका टाइम ऑफ फ्लाइट, देन एक्सेट्रा। देन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन विद ऑल इट्स केसेस, आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। देन हमारे पास न्यूमेरिकल्स 3.3, 3.8, 3.9, 3.10, 3.13 and then 11, 13 and 14 are very important, and I prefer कि आप इनके examples भी solve करें। Okay, so moving towards, we have chapter number 4, which is work. Show that the work done in Earth gravitational field is independent of the path followed. Very important questions. Define term power. Show that power is the dot product of force and velocity. P is equal to F dot V. इसका पूरा proof है, वो भी आपको आना चाहिए। और एक और आता है कि 3.6 मेगा वाट के proof करे, वो short आता है। Next we have state the work energy principle and explain its mathematical form. Next we have describe the interconversion of potential energy into kinetic of the free falling object. Very important long question. Next हमारे पास इसके न्यूमेरिकल्स आते हैं 4.1, 4.2, 4.3, 4, 5, 6, 7 to 8, 4.1 to 4.8. नेक्स्ट जो हमारे पास चैप्टर नंबर 5 है, इसमें हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, केस ऑफ अपेरेंट वेट इन लिफ्ट एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। दिस कैन होप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आई प्रेफर आप इसको करें, एंड मोमेंट सेंट्रीपिटल फोर्स एज वेल। नेक्स्ट हमारे पास इसके न्यूमेरिकल्स हैं 5.2, 5.5, 5.3, 5.6 एंड 5.7। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास चैप्टर नंबर 6 है, इसके लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास है टर्मिनल वेलोसिटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, बर्नौलीज इक्वेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन। नेक्स्ट में हमारे पास कुछ थर्मामीटर्स भी आते हैं, उसको आपको करने की ज़रूरत नहीं, वो जस्ट शॉर्ट के लिए आते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल 6.1, 6.2, 6.4, 6.7 एंड 6.9। एंड स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास है चैप्टर नंबर 7। इसके हमारे पास जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस है, वी हैव हॉरिजॉन्टल मास सिस्टम, सिंपल पेंडुलम, एनर्जी कंजर्वेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, रिसोर्सेज एंड इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। नेक्स्ट हमारे पास इसके न्यूमेरिकल 7.1, 7.2, 7.4 एंड 7.5। अगेन आई एम सेइंग डोंट डिपेंड अपॉन दिस न्यूमेरिकल्स, आई प्रेफर कि आप साथ साथ इसके एग्जाम्पल्स भी करें, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव चैप्टर नंबर 8 के लॉन्ग क्वेश्चन है, व्हाट डू यू नो अबाउट द बीट्स फिनोमिना, एक्सप्लेन इट्स एप्लीकेशन, राइट अबाउट द स्टेशनरी वेव्स, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स,
how the stationary waves are produced in the stretched string, prove that. Then speed of sound in air, and what is the effect of temperature in speed of sound. नेक्स्ट हमारे पास इसके न्यूमेरिकल्स 8.1, 8.3, 8.5, 8.6 एंड 8.7. मूविंग टूवर्ड्स चैप्टर नंबर 9 न्यूमेरिकल्स हमारे पास इंपॉर्टेंट है 9.3, 9.4, 9.5, 6 एंड 7. इसके इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, द न्यूटन्स रिंग, देन डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग, डायफ्रैक्शन ऑफ रेज बाय क्रिस्टल्स एंड मैक्लेंसन इंटरफेरोमीटर. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास सेकंड लास्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 10. इसके इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस है एक्सप्लेन द फॉर्मूला ऑफ द एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ अ सिंपल microscope. Then we have what is this, derive the formula of the angular magnification compound microscope. Then we have, what do you know about the astronomical telescope? Then we have telescope with the help of diagram. Then we have explain the expression of magnifying power in astronomical telescope. Then we have what is meant by spectrometer. Then we have what are the some advantages of fiber optics. Friends, I prefer अगर आप इतने लॉन्ग भी अटैम्प्ट कर ले, your 80 to 90% of the long will be completed. नेक्स्ट इसके हमारे पास न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट है 10.3, 10.8 एंड 10.9. That's it, last but not the least. And then हमारे पास चैप्टर नंबर 11 से आई थिंक सो लॉन्ग इंक्लूड नहीं है. इसके न्यूमेरिकल्स है 11.1, 11.3, 11.4, 11.7, 11.8 and then 11.11. Okay students, so that's it for today. I hope आपको आज का लेक्चर काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और इंशाल्लाह अगर आप ये लॉन्ग्स अटैम्प्ट कर लेते हैं तो आपका 80 to 90% of long questions will be attempted. So students, all the very best, and remember me in your prayers. Last but not the least, it's a request to all of you to please like, share, subscribe and comment on my channel. Wish you good luck and मिलते हैं next video में. Till that, Allah Hafiz. Thank you so much.